Good evening. How are you? Are you both okay? Perfect. So, where did we stop in the last class? We had completed 1 year calipers measurement, right? We had started with screw gauge or no? Did I tell you all how to take zero error and all that? All those? ठीक है. कुछ doubt है तो पूछो. उसमें कुछ doubt है? पक्का? तो तुम लोग पूछो हाँ एकदम चुपचाप आके बैठ के चले जाते हो तो हम लोग को समझ में नहीं आता लोगों को समझाएंगे. सब समझ में आ रहा है ना? What language you are comfortable in? English only or Hindi also you understand? Both you understand? Both of you? So today I'll start with measurement of length using screw gauge. Okay. Okay. So how a screw gauge looks like? Let's see that.
This is how it is. Okay. So the object to be measured is held here, right? And when you rotate this, so this is the screw actually. This is the nut. So when you rotate it, you must have seen screw. When you rotate, it will either travel this way when you rotate it clockwise, and when you rotate it anti-clockwise, it will come out. So this is the principle of screw. Whenever a screw is rotated, it travels horizontally. Okay? तो उससे क्या होगा? If any thin object you want to measure, so let's say the diameter of a wire. So you'll put a wire here and tight it. Then look at the scale. So there are two scale. There is this scale, okay? Like main scale, we have a horizontal scale like this. And then there is a circular. Can you see the circular markings? So you can see the diagram in your book here. So there are two scales, the circular scale here on the cylinder, okay? And then you have a horizontal scale. Okay? Now on the horizontal scale, you have a baseline, this horizontal line. This is called the baseline, okay? And this zero, the circular scale zero, it has got 100 divisions. How many divisions? 100 divisions. Means in one full rotation, 100 circular division will cross the baseline. Okay? Is it understood? Acha. And how is screw designed? The screw is like this. A screw has thread, isn't it? Screw has threads like this. Let me draw a line like this. Any nut, if you have seen, it has threads like this. Okay? Go ahead and do it. Okay. Now, if it is fixed in some nut, let us say there is a nut. If you rotate it like this, let's say you rotate it like this, then in one rotation, it will cover this much distance. Correct? It will advance by one thread. So that is called pitch. What is pitch? We are learning about screw gauge. What is the pitch? It is the horizontal distance covered or traveled by the screw in one full rotation. Okay? So once you rotate it by one full round, starting with this zero, matching the baseline of the main scale. Okay? This is also main scale only. Okay? So you have what is the observed reading? Okay. So this horizontal scale is same like your vernier main scale. Okay. And then the other scale is circular scale on the screw gauge.
On vernier scale, you had that also horizontal only with 10 divisions, right? Here on the circular scale, how many divisions you have? 100. Is that clear? Okay. So now you have understood what is pitch. Pitch is the distance traveled by the screw in one rotation. Okay. And it is generally 1 millimeter. In your book, what is the pitch given? 1 millimeter. Okay. So screw को ऐसे एक बार rotate किया तो 1 millimeter आगे जाएगा. Okay. Now, so how to calculate the least count? Least count of screw gauge. क्योंकि सबसे पहला स्टेप क्या करना है? We have to find the least count. Okay. Is equal to, it is defined as pitch divided by total number of division on circular scale. On circular scale. ठीक है, ऐसे निकालते हैं. जैसे हमने लीस्ट काउंट को पहले वर्नियर कैलिपर्स निकाला था. कितना आया था लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर्स का? कितना था? 0.1 मिलीमीटर, है ना? स्केल का कितना था? 1 मिलीमीटर. और वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट आया था 0.1. अब स्क्रू गेज से निकालते हैं. तो स्क्रू गेज का कितना है? देखो, पिच हमने क्या बोला? 1 मिलीमीटर. टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल मैंने कितना बताया था? 100. ये कितना आ गया? 0.01 मिलीमीटर. तो 1 मिलीमीटर का 100 पार्ट करेंगे, 1/100 of a millimeter. So its least count is even better. It can measure even smaller lengths. Correct? So this can be written as 0.001 centimeter. So this is the least count of LC of screw gauge. मतलब मिलीमीटर में चाहिए तो भी ये हो जाएगा. इसको ऊपर लिखना चाहिए. मिलीमीटर में कितना है LC of screw gauge? This much. ठीक है, तो ये लिख लो पहले. तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट को मेजर करने से पहले हमको क्या चाहिए? उसका लीस्ट काउंट चाहिए. तो स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट ऐसे निकालते हैं. The principle of screw है. क्या है principle of screw? When the screw is rotated, it travels horizontally. Pitch of screw.
So whenever you are asked to give the definition of least count of screw gauge, you give this one. Done? ठीक है, तो इसमें भी कैसे मेजरमेंट लेना है? So observed reading. होगा मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग. मेन स्केल रीडिंग है, सर्कुलर स्केल रीडिंग. जैसे वहां पे वर्नियर स्केल था, यहाँ पे क्या है? सर्कुलर स्केल. ठीक है, सर्कुलर स्केल. सीएसआर का मतलब ये, एमएसआर का क्या है? मेन स्केल रीडिंग. ठीक है, एमएसआर क्या है? जो हॉरिजॉन्टल स्केल पे रीडिंग दिख रहा है वो एमएसआर. देखो ये वाला डायग्राम देखो 1.11 तुम्हारे इसमें. अभी 0 के बाद में 1 2 दिख रहा है. तो मेन स्केल रीडिंग क्या हो गया? 2 मिलीमीटर. क्या हो गया मेन स्केल रीडिंग? 2 मिलीमीटर. ठीक है, तो अभी हमें मिलीमीटर में देख रहे हैं. ठीक है, अच्छा, तो अब यहाँ पे हमको देखना है सर्कुलर स्केल रीडिंग. अब सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना दिखा रहा है तुमको? जो भी कोइंसाइडिंग डिवीजन है बेस लाइन से. कोइंसाइडिंग डिवीजन क्या है? इसमें देखो तुम्हारे पास बुक नहीं, क्या टेक्स्ट बुक लाया नहीं तुम्हारे पास? आ जाओ इधर, आ जाओ इसके साथ. अभी हम मेजरमेंट लिखने वाले हैं, ये फॉर्मूला यूज करेंगे. डायग्राम 1.11 निकालो. पीछे 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 जाओ, तुम आगे चलेंगे. हाँ ये वाला डायग्राम 1.11. अब देखो इसमें तो मेन स्केल रीडिंग क्या है? 2 मिलीमीटर. मेन स्केल पे जितना दिख रहा है 2 मिलीमीटर. तो इस केस में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 मिलीमीटर प्लस ये सब सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या है? बेस लाइन से कौन सा डिवीजन कोइंसाइड हो रहा है? 56. क्योंकि ऊपर 60 है. कौन सा डिवीजन को दिखाओ, उंगली रख के दिखाओ. 56 मैच हो रहा है किससे? बेस लाइन से. ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना मेन स्केल का, उससे. वो कौन सा है? 56. तो कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट है ना. क्या होगा? लीस्ट काउंट कितना है? अभी मिलीमीटर में लेना है लीस्ट काउंट. 0.01 मिलीमीटर. क्योंकि ये मिलीमीटर में लिया तो ये भी मिलीमीटर में लेना. तो अभी आंसर कितना आ गया? ये हो गया 0.56. So 2 millimeter
प्लस 0.56 मिलीमीटर, कितना हो जाएगा ये? 2.56, ठीक है। तो अभी सेंटीमीटर में कितना हो गया? 0.256, ये हो गया तुम्हारा ऑब्जर्व रीडिंग, ठीक है। लेकिन हमारा करेक्ट रीडिंग क्या होता है? दिस इज एज पर फिगर 1.11, और अब उसका पेज नंबर बोलो 90। तो ऑब्जर्व रीडिंग कैसे लेते हैं स्क्रू गेज का समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन अभी तक इसमें ये विदाउट जीरो एरर, अगर जीरो एरर होता तो करेक्ट रीडिंग क्या होगा? करेक्ट रीडिंग या करेक्टेड रीडिंग, करेक्टेड रीडिंग है कि करेक्ट रीडिंग, क्या होता है? करेक्ट रीडिंग is equal to observed reading minus zero error with sign. ऑब्जर्व रीडिंग निकालने का ये मेथड है MSR प्लस CSR, ठीक है। अभी जीरो एरर अगर नहीं है तो यही तुम्हारा करेक्ट रीडिंग है, ठीक है। तो जीरो एरर नहीं कौन से सिचुएशन में होगा? जब तुम्हारा पूरा सर्कुलर स्केल को क्लोज करेंगे विदाउट एनी ऑब्जेक्ट, बीच में ऑब्जेक्ट नहीं रखा है, पूरा बंद कर दिया, तो जो जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल है बेस लाइन को मैच होना चाहिए, ठीक है। कैसा होना चाहिए? नो जीरो एरर का केस। अभी इसको तुम्हारे बुक में नो जीरो एरर का केस दिया ही नहीं, ठीक है। ये जो सर्कुलर स्केल का जीरो है बेस लाइन के जीरो को मैच हो जाएगा, पूरा बंद करेंगे तो देयर इज नो जीरो एरर। जैसे जॉस को पूरा क्लोज किया वैसे यहाँ पे जो स्टड दिख रहा था तुमको, ये वाला, ये जो ओपनिंग दिख रहा है ना, इसको पूरा क्लोज कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा, स्टड के साथ में जाके मिल जाएगा। ये इसको जाके टच हो जाएगा विदाउट एनी ऑब्जेक्ट, तो फिर ये जो जीरो है ये वाला जीरो इधर रहेगा, ठीक है। गिव सम रिएक्शन, आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो जीरो एरर मीन्स नो जीरो एरर, zero of zero mark of circular scale coincides with baseline when the screw at the head, what is it called? When the screw touches the stud. In your book, what is written? What is this end written as? It is called spindle. When the spindle of screw touches the stud, ठीक है। तो ये कब होगा? जब उसको पूरा क्लोज करोगे तो ये जो स्पिंडल है, ये साइड को स्पिंडल बोलते हैं, ये साइड को स्टड बोलते हैं, इसको जाके टच, उस टाइम पे जीरो मार्क ऑफ सर्कुलर स्केल कोइंसाइड्स विद द बेस, तब तो नो जीरो एरर। अब पॉजिटिव जीरो एरर कब होगा? पॉजिटिव
पॉजिटिव जीरो एरर तुमको दिख रहा है फिगर 1.9 देखो तुम्हारे बुक में 1.9 पेज क्या है 70 पेज 70 उसमें क्या है जब तुम्हारा स्पिंडल स्कर्ट को टच कर रहा है वो टाइम पे जीरो कहाँ है बेसलाइन के नीचे ओके जीरो ऑफ द बेसलाइन जीरो ऑफ स्क्रू गेज zero on circular scale CS है circular scale is below baseline ठीक है तो आप उसको कैलकुलेट कैसे करोगे तो व्हाट इज द कोइंसाइडिंग डिवीजन 5 बेसलाइन से कोइंसाइड क्या कर रहा है 5 तो कैसे कैलकुलेट होता है इट इज प्लस साइन क्या हो गया प्लस coinciding division with baseline coinciding division of circular scale with baseline multiplied by LC of screw gauge LC of screw gauge ये हो गया तुम्हारा पॉजिटिव जीरो अब तुम क्या करोगे ऑब्जर्व रीडिंग में से उसको सब्ट्रैक्ट करोगे ठीक है ये कितना आ गया तुम्हारा इस केस में ये फिगर के लिए कितना आया व्हाट इज द कोइंसाइडिंग डिवीजन 5 और तुम्हारा लीस्ट काउंट कितना है 0.01 ये आ जाएगा प्लस 0.05 मिलीमीटर ठीक है प्लस 0.05 मिलीमीटर समझ आ गई बात ठीक है तो ये हो गया उस एग्जांपल के हिसाब से तो सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा और प्लस 0.005 सेंटीमीटर ठीक है ये चीज समझ में आ गई अच्छा अब तुम मुझे बताओ अब निगेटिव जीरो एरर कैसे निकालेंगे निगेटिव जीरो एरर में जो जीरो ऑन द सर्कुलर स्केल है वो बेसलाइन के ऊपर चला है ठीक है ठीक है ना ये देखो इसको ऐसे रखना है ऐसे हमने वहां पे नेगेटिव में क्या रखा था लाइन के लेफ्ट में गया है कैसे रखना है ऐसे और यहाँ पे देखो ये लाइन के राइट में तो पॉजिटिव जीरो है लाइन के लेफ्ट में तो नेगेटिव है ठीक है समझ आ गया तो उसका कोइंसाइडिंग डिवीजन क्या है यहाँ पे 95 तो नेगेटिव एरर में हमने क्या किया था कोइंसाइडिंग डिवीजन को सब्ट्रैक्ट किया था टोटल नंबर ऑफ डिवीजंस याद है वर्नियर स्केल 10 माइनस क्या देखो नेगेटिव जीरो एरर कैसे निकाला था वर्नियर कैलिपर से ये 10 माइनस कोइंसाइडिंग डिवीजन किया था ना तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 100 करेंगे क्योंकि सर्कुलर डिवीजन पे कितना है 100 तो 100 माइनस कोइंसाइडिंग डिवीजन अब देखो यहाँ पे नेगेटिव जीरो एरर निकालो इक्वल टू तो सबसे पहले तो साइन माइनस अब क्या होगा 100 माइनस कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ स्क्रू गेज विथ बेसलाइन ठीक है इनटू लीस्ट काउंट ऐसे निकल अब से दोबारा तो और फिगर कौन सा फिगर है 1.9
1 2 बेस कितना है? फिगर 1.12 सॉरी फिगर 1.9 था ना ये, तो ये है फिगर 1.10 नॉट 1 हाँ उसका कितना है 1.1 18 कहाँ है 18 हाँ तो उसमें बताओ मेरे को कितना है, कितना आएगा 100 माइनस 95 इंटू लिस्ट काउंट कितना है 0.001 सेंटीमीटर में नहीं लेना है क्योंकि ये सब हमारा किसमें मिलीमीटर है, फाइनल आंसर सेंटीमीटर, पहले मिलीमीटर में लिखा 0.01 ठीक है, तो सेंटीमीटर में भी कर सकते हो, ये कितना आ गया अभी -5 इंटू 0.01 -0.05 मिलीमीटर, तो फाइनल निकाल दिया 0.005 सेंटीमीटर, ठीक है समझ आ गया। तो अब हमको एक एक्सरसाइज ले लेते हैं। अभी हमने क्या सीखा कि जीरो एरर कैसे निकालना है, ठीक है तो ये लिख लो पहले, इसको तो नींद आ रही है बेटा, पानी पी ले थोड़ा, ठीक है ये लिख लो मेजरमेंट कैसे करना है स्क्रू का। ऑब्जर्व रीडिंग इज मेन स्केल रीडिंग माइनस प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, ये तो ऑब्जर्व हो गया विदाउट जीरो एरर।
हो गया? चलो अभी क्वेश्चंस करें. न्यूमेरिकल स्कोर. टेक्स्ट पे और आ गया तो सॉल्व एग्जांपल्स है ना, ये तुम लोग घर में पढ़ना. अभी हम न्यूमेरिकल्स करें. चलो पहला वाला कौन सा न्यूमेरिकल पढ़ो. A stopwatch has 10 divisions graduated between the 0 and 5 second mark. What is the least count? Okay. So how to find the least count? Least count is one division. What is the value of one division? So from 0 to 5 seconds, how many divisions are there? 10 divisions are there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ठीक है? This means how will you find out? 10 division correspond to 5 seconds. Therefore, 1 division will correspond to how much? You know this sign, right? 3. This is called corresponds to, not equal to. So 1 division corresponds to 5 by 10 seconds, which is equal to 0.5 seconds. So least count is always what is the one division of the clock will tell you. Understood? By definition of least count, it is the smallest measurement. So smallest measurement has to be value of one division. Okay? So that's how it is. Okay, now do the third question. What is the third question? Date. Microscope is provided with a main scale graduated with 20 divisions with 1 centimeter and the vernier scales with 50 divisions of it of length same as our 49 divisions of main scale. Find the least count of the microscope. So question 3. So what is the least count? Least count is value of one division on main scale divided by total number of division on vernier scale. You know this. Yeah? How to find the least count for a vernier calipers? Value of one division on main scale. So what is value of one division on main scale? one by 20 centimeter, isn't it? 20 division is 1 centimeter. So 1 division is 1 by 20. Okay. So this is 1 divided by 20 centimeter. Divided by what is total number of division on vernier scale? 50. 50. So divided by 50. So now this is fraction. So this becomes 1 upon
20 into 50, that many centimeters. So this is 1 upon 1000. So it will be 0.001 centimeter. Isn't it? Do the fifth question. Also do the fourth question. Let's see. Who's that? Fourth question. Why uses a real calipers to measure the thickness of his pencil? He measures it to be 1.4 millimeter. If the zero error of vernier calipers is plus 0.02 centimeter, what is the correct thickness of his pencil? So what is given 1.44 millimeter is, what is it? There is a zero error also. So what is 1.44? It is observed reading. Okay? So given, what is correct reading? Correct reading. Correct reading is Observed reading minus observed reading minus zero error. Zero error with sign. In this case, it is anyway positive zero. So what is observed reading? 1.4 millimeter. Correct? Minus, what is the zero error? 0.02 centimeter. The units are separate. You have to make the units same. So 1 centimeter is 10 millimeter. So this is equal to 1.44 millimeter minus 0.02 into 10 millimeter. So this becomes 1.44 millimeter minus 0.2. So how much is this? 1.2 millimeter. Because it is, when the sign is plus, we need not write the sign, right? It will be separate. So if it is in centimeter, it is in millimeter. You can't do the calculation. You have to make the units same. So try the fifth question now. So hope you are getting the hang. It's not that difficult. It's very easy. If you know the formulas, very simple questions. Do the fifth question. Question 5. Yes, what is to be calculated first? Least count. So, and it is vernier calipers. What is the formula for least count of vernier calipers? Value of 1 division on main scale. So it says it is calibrated in, it is graduated in millimeter. So 1 division is
How much? It says no, vernier calipers has its main scale graduated in millimeter. So each division is a millimeter, it says that. So least count is 1 division, मतलब 1 millimeter divided by, what is the number of division on vernier scale? Which question you are reading? 5. So it is 10. 1 millimeter by 10. So what is the least count then? 0.1 millimeter. Which is 0.01 centimeter. Are you getting? Huh? So we have calculated the least count. Because question itself says vernier caliper has its main scale graduated in millimeter. So each division of the main scale is 1 millimeter. Okay. So this is given to confuse you, like on its vernier scale are equal to length in 9 millimeter. That's okay. There is another formula for calculating the least count. Difference between 1 division on main scale minus 1 division on vernier scale. Okay. So either you may use that formula or you can find this with this one. So this is easy, right? Or else you have to find out. So 10 divisions of vernier scale is equal to 9 millimeter. So 1 division on vernier scale will be 9 by 10, 0.9. Then you take the subtraction. 1 division on main scale minus 1 division. That also gives you the same result. Okay, as this formula. So there are two formulas for least count. Both will give you same result. Okay. Now you have to find the zero error of the vernier calipers. Now give the zero error. What is the zero error? So what is written? When two jaws are in contact, the zero of the vernier scale is ahead of zero of main scale. So is it positive or negative error? Whenever the zero of vernier is ahead. Ahead. Positive. It's not before, it's ahead. See your notes, what I have given. When is the zero error positive for vernier scale? It was in the last lecture. It will be positive. So what is the positive zero error? Coinciding division into least count. What is the coinciding division? Are you reading? What is the coinciding division? Which division of vernier scale is coinciding with main scale? Third. So how to find the zero error? Coinciding division into least count. So coinciding division, first it is positive zero error because zero is lying ahead, and then 3 into 0.01 centimeter. What is the answer? 0.03 centimeter. Understood? See, you have to understand, otherwise you'll forget later on. How we are doing, explain. This is the coinciding division of the vernier scale with main. It is given in the question.
Then you have to multiply this with least count to get the, and you have to also have the sign because it is positive 0. Got it? Okay. To the sixth question. Do it yourself. Sixth question. Give me the least count. What is the formula for least count? Value of 1 division on main scale divided by total number of divisions. yes For this. divided by total number of division on vernier scale, right? So what is the value of one division on main scale? 1 millimeter. What is the total number of division on vernier scale? 20. That's it. So what is 1 by 20? Total number of divisions. 1 by 20 solve. So how to solve? Your numerator is smaller. So multiplied by a bigger number, 100. 20 into 100. Okay, you can do this. Now cut 1 0 from here. So this is 5. 5 by 100. Yeah, 2 by 7. This is a technique I am telling you. When the numerator is small, multiply by 10 or 100. What is it? 0.05. Right? Millimeter. What is the least count? 0.05 millimeter. Or 0.005 centimeter. Okay. Now, what is the second part of the question? This was the first part. Second part, now what do you have to find? What do you have to find in the second part? Radius. Radius. And what is given? In measuring the diameter. So what the vernier calipers is showing? Diameter it is showing. So radius will be half of the diameter. Right? So what is the observed reading? Observed diameter. What is observed diameter? So basically, radius is equal to, as a radius is equal to half of observed diameter. Radius is half of diameter. Half of diameter. This you know, right? But what is diameter? That is the measurement. Diameter is equal to main scale reading plus vernier scale reading.
What is main scale reading? What is main scale reading? 35 division. And each division is millimeter. That means it is 3.5 centimeter. This is 35 millimeter. So it is 3.5 centimeter, correct? So this is 3.5 centimeter or 35. You can write 35 millimeter. So 35 millimeter. Plus, what is vernier scale reading? Which is coinciding division? So fourth into least count. Fourth into, what is the least count in millimeter? 0.05. Correct? So everything in millimeter. So how much is this? 35.2 because 4 by 20, 0.2 millimeter. So how much is this? 35.2 millimeter. This is the diameter in millimeter. So this is equal to 3.52 centimeter. Correct? But we wanted radius. Okay? So what will be radius then? Half of this. Yeah. Therefore radius is equal to how much is this? 2 1 0 2 2 2 0 4 1.26 centimeter. Is that correct? Something wrong. 1.76 it is. Why it is? Huh? 4 into 0.05 is not 0. It's 2 millimeters. What is wrong? Oh, this division is wrong. 2 ones are 2. This is 15.7 and then 6. Division was wrong. It is 1.76 centimeter. Okay. So today we did all vernier calipers. You can try remaining. So are you comfortable now? Okay. Then in the next class we'll take up 1 or 2 screw gauge questions. And then I'll try to finish the chapter in the next class. Next or 2 more. What are they teaching you in school now? We have not started with the verniers. No, which chapter they are teaching you? It's same chapter, measurements and And what about you? scale. Same school, both of you. But are you comfortable now?